इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वतंत्र भारत में अयोध्या आंदोलन जैसा पूरा आंदोलन नहीं कभी खड़ा हो सका। और जब 1990 में यह राम रथ यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित की, तब मैंने कहा कि मुझे विश्वास है कि देश के करोड़ों लोगों के मन में जो राम भक्ति का भाव पैदा हुआ है, उसका लक्ष्य केवल मात्र अयोध्या में राम जन्म स्थान पर एक भव्य राम मंदिर निर्माण करना नहीं है, वह तो है ही। उसको पूरा किए बिना हिंदुस्तान के लोगों को कभी चैन प्राप्त नहीं होगा, कभी शांति प्राप्त नहीं होगी, जब तक इसी स्थान पर जहां पर राम जी का जन्म हुआ वहां पर एक भव्य राम मंदिर तैयार नहीं हो जाता। लेकिन राम भक्ति के माध्यम से हम कल्पना करते हैं कि राष्ट्र शक्ति जगेगी, और जो राष्ट्र शक्ति इस भारत माता को 1947 से पहले जिन देशभक्तों ने बलिदान देकर के, जिन देशभक्तों ने तपस्या करके, जिन देशभक्तों ने त्याग करके और यह कल्पना की थी कि हम भारत माता का ऐसा भव्य मंदिर बनाएंगे जिसके बारे में अरविंद घोष ने कहा कि यह भव्य मंदिर ऐसा होगा कि जिस प्रकार से पूर्व काल में, प्राचीन काल में दुनिया भर के देश आकर के भारत को विश्व गुरु मान करके उसके सामने शिक्षा देते थे, वैसे भविष्य में भी ऐसा दिन आएगा जब भारत फिर से विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करेगा और दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के देश जिन समस्याओं को हल नहीं कर पाएंगे वह भारत से आकर के शिक्षा देंगे कि इन समस्याओं का हल कैसे करेंगे। July 3, Lucknow. A special day in the Rath Yatra since it reached the constituency of India's former and would-be Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee. The rally in the capital of Uttar Pradesh was a grand affair. Shri Advani explained that the thrust of the BJP's politics in the state was Samajik Samarasta or social harmony. Referring to the violent Shia-Sunni clashes that had rocked the city prior to the arrival of the Yatra, he made a fervent appeal to the Muslim community to settle the dispute amicably through mutual negotiations. After a series of memorable receptions and rallies in Bareilly, Shahjahanpur and Muradabad, the Yatra reached Haridwar at night. Indeed, an appropriate place for Shri Advani's patriotic pilgrimage to reach and seek the blessings of Ganga Mata, a symbol of eternal flow of Indian civilization. Himachal Pradesh, the land of high mountains, deep valleys and vast orchards. The Swarna Jayanti Rath Yatra entered the scenic state at Parvanu after a spirited public meeting the previous night at the Union Territory of Chandigarh. Solan, Hamirpur, Kangra and hundreds of beautiful little villages in between gave a warm welcome to Shri Advani. Shimla, the state's capital, saw one of the biggest ever meetings in its history, indicating that the Yatra became a big hit as much in the high Himalayan mountains as in the hot plains of Telangana or the coastal stretches of Kerala.
the Swarna Jayanti Rath crossed the Ravi River to enter Jammu and Kashmir at Lakhanpur, it was an emotional moment for the BJP president. For it was here, 44 years ago, that the founder of the Bharatiya Janasangh, Dr. Syama Prasad Mukherjee, had been arrested by the government of Sheikh Abdullah for having entered what was and will forever be an integral part of India without a prior permit. Dr. Mukherjee's journey under detention from Lakhanpur to Srinagar also proved to be his last journey, for he became a victim of medical murder in the capital of Kashmir. Dr. Mukherjee के बलिदान के कारण जम्मू कश्मीर का इतिहास बदला। उस समय तो खतरा पैदा हो गया था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा रहेगा कि नहीं रहेगा। बहुत षड्यंत्र रचे गए थे, लेकिन वो षड्यंत्र विफल हो गए। परमिट सिस्टम खत्म हो गया। भारत के राष्ट्रपति का अधिकार जम्मू कश्मीर तक फैल गया। भारत के सुप्रीम कोर्ट का अधिकार जम्मू कश्मीर तक आ गया। इलेक्शन कमीशन का अधिकार जम्मू कश्मीर तक विस्तृत हो गया। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का अधिकार जम्मू कश्मीर तक विस्तृत हो गया। और इसीलिए कभी कभी जब कोई बात कहता है कि 1953 के पहले की स्थिति होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। In the state of Jammu and Kashmir, large number of people from the Muslim community welcomed Mr. Advani. In Hiranagar, Mr. Advani paid homage to two martyrs, Bihari Lal and Bhikam Singh, who were shot dead in 1953 while trying to hoist the Indian flag on Indian soil. By the time the Swarna Jayanti Rath reached Jammu, it had started raining heavily. Not even the torrential rain, however, could dampen the people's enthusiasm. From Jammu, the Swarna Jayanti Rath once again crossed the Ravi River to enter Punjab at Madhopur. Right from the point of entry, Punjab offered something special to the yatra. For one thing, it was organized jointly by the BJP and its ally in the government, the Shiromani Akali Dal, signifying the strength of the bond that binds the two parties together. The state's Chief Minister Shri Prakash Singh Badal came personally to receive the BJP President and remained his Sahayatri for the entire day until the yatra reached its night halt destination, Amritsar. The most heartening feature was the warmth with which ordinary Sikhs and Hindus jointly greeted the Swarna Jayanti Rath in village after Punjab village and town after Punjab town. To a state that was traumatized by more than a decade of foreign-inspired terrorism, these scenes provided testimony to the fact that the ties between Hindus and Sikhs are unbreakable, since they are forged in the common tradition of spiritual brotherhood and sacrifice.